Jai Hind everybody. So today I am starting with question number 5 of exercise 13.3. Question is this, कि what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter. कोई टेरिपोलिन है आपके पास. टेरिपोलिन एक मोटा सा कपड़ा होता है जिससे कि टेंट आदि चीज़ें बनाई जाती हैं. ओके, वो 3 मीटर वाइड है. कह रहा है उसकी कितना लंबा टेरिपोलिन चाहिए जिससे कि हम जो है एक ऐसा कोनिकल टेंट बना लें जिसकी रेडियस कितनी हो 6 मीटर एंड हाइट 8 मीटर. यानी इसी जो है टेरिपोलिन से, जो कि रेक्टेंगुलर इन शेप है, इससे हमने कोनिकल टेंट बनाना है. तो यू आर गिवन R इक्वल टू 6 मीटर एंड H इज इक्वल टू 8 मीटर. तो फर्स्ट वी विल फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल टेंट. तो स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल टेंट इज L इज गिवन बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. व्हेन वी विल पुट दीज वैल्यूज, this will R is 6 square plus 8 square, L will be equal to under root 6 square plus 8 square, 6 6 is 36 plus 64, that is under root 100. This is 10 meter. So what is the slant height of the conical tent? That is 10 meter. Now according to question, the area of this tarpaulin, area of this rectangle tarpaulin will be is equal to CSA of the cone. क्योंकि इसी टेरिपोलिन से हम क्या है इस कोन को बना रहे हैं. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर टेरिपोलिन विल बी इक्वल टू CSA ऑफ कोनिकल टेंट. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ x इंटू 3 विल बी इक्वल टू पाई RL. x इंटू 3 कैन बी रिटन एज 3 इंटू x इज इक्वल टू पाई. पाई इज मेंशन्ड इन दिस क्वेश्चन 3.14. पाई R is 6 meter and L is 10. Therefore x will be equal to 3.14 into 6 into 10, और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड कर लेगा. तो 3 2 जा 6. तो दिस विल बी 3.14 into 3 2 जा 6 into 10. When you will multiply this will be 2 4 जा 8 and 62.80 meter. So this is the length of tarpaulin. But one more thing is given there, कि assume that the extra length of material that will be required for stitching margin and wastage is cutting approximately 20 सेंटीमीटर. आपको क्या दे रखा है कि इसमें कुछ जो एक्स्ट्रा लेंथ होगी जो कि 20 सेंटीमीटर गिवन है, वो स्टिचिंग मार्जिन और वेस्टेज के लिए है. तो नाउ सिंस एक्स्ट्रा लेंथ फॉर stitching margins and wastage, that is given 20 centimeter. Just convert it into the meter. The 20 upon 100, this will be 0.2 meter. This is the extra length. Therefore the actual length of tarpaulin, that will be this length, how much, 62.80 meter plus 0.2 meter. When you will add them, you will get 63 meter. So what is the length of tarpaulin? That is 63 meter. It's okay. Now this is question number 6. The slant height and the base diameter of a conical tomb are 25 meter and 14 meter respectively. You are given the slant height of conical tomb is 25 meter. Conical tomb कोई कोन की तरह तंबू है, तो उसकी स्लैंट हाइट गिवन है 25 मीटर.
radius of conical tomb is given, the diameter was given 14, therefore the radius will be 14 upon 2, which is 7 meter. Question is this: find the cost of whitewashing its CSA at the rate of rupees 210 for 100 मीटर स्क्वायर। आपको जो है इसके CSA में वाइट वॉशिंग करनी है तो उसकी आपने कॉस्ट निकालनी है, जबकि आपको क्या दे रखा है कि 210 रुपीज़ जो कॉस्ट है वो 100 मीटर स्क्वायर की है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ कोनिकल टॉम विच इज़ टू बी वाइट वॉश, जिसको कि हमने वाइट वॉश करना है, पुताई करनी है जिसमें, तो दैट विल बी CSA ऑफ कोनिकल टॉम विच इज पाई इंटू आर इंटू एल। जस्ट पुट द वैल्यू पाई 22/7, R you are given 7 and L is given 25. Just multiply them. 7 to 7 is cancelled. 25 to the 50, 25 to the 50 and 5, 550 meter square. Now cost of whitewashing of 100 meter square is rupees 210. Therefore rate of whitewashing of 1 meter square will be 210 upon 100 rupees. It's okay. So therefore, what is the total area which is to be whitewashed? That is 550 meters. इसलिए total cost of whitewashing will be given by, this is the cost, 210 upon 100 or into 505 piece. Now just calculate it. What you will get? 210 into 100, 5.5. Just multiply it. 105, 105 और 10, 115, 1155.0, that is rupees 1155. So what is the cost of, total cost of whitewashing? That will be rupees 1155. Now this is question number 7. A joker's cap is in the form of a right circular cone of base radius 7 cm and height 24 cm. कोई जोकर की कैप है जो कि एक कोन की तरह है, ठीक है, सर्कुलर कोन की तरह है, जिसका रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर। गिवन है रेडियस ऑफ cap is there. Conical cap R, it is given 7 centimeter. Okay, and its height is 24 centimeter. Height of the conical cap, that H is given 24 centimeter. Question is this: find the area of the sheet required to make 10 such caps. ऐसी जो है आपको 10 कैप्स बनानी है, उसके लिए जो है आपको कितना एरिया लगेगा शीट का। तो नाउ sheet required for making a
conical cap. That will be CSA of the cone, that is pi into r into L, where L is the slant height. Now slant height L is given by under root r square plus h square. Just put all the values, you will get r is 7 square and this is 24 square. That is 7 7 is 49 and 24 into 24 is 576. Add them, you will get under root 625, which is 25 centimeter. Therefore, seat required for one conical cap. Okay. So what is given here? Pi r L. Pi is 22 upon 7, r is 7 and L is this much. Just multiply them. 7 to 7 cancel. So 50 and 550 centimeter square. And question is this: find the area of the seat required to make 10 such caps. ऐसी ऐसी हमें जो है 10 caps बनानी है. तो therefore seat required to make 10 conical caps. That will be एक कैप के लिए 550, 10 कैप के लिए 10 into 550, that is 5500 centimeter square. So how much seat will be required to make 10 conical caps? That is 5500 centimeter square. Now this is question number 8. A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. ठीक है, किसी बस स्टॉप में जो है बैरिकेडेड लगाए गए हैं रोड के रिमेनिंग पार्ट से अलग रखने के लिए, जो कि कैसे हैं? कोनिकल हैं. 50 हॉलो कोन्स हैं जिनको रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड से बनाया गया है. ईच कोन हैज ए बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर. यू आर गिवन बेस डायमीटर ऑफ ईच कोन. तो यू आर गिवन base diameter is given. So I am finding base radius of each cone. That will be, the base diameter is given how much? 40 centimeter. So this will become 40 upon 2, that is 20 centimeter. And just convert it into this one, 20 upon 100 meter. So that will be 0.2 meter. This is the base radius of each cone, which is denoted by R. Which is denoted by R. Okay. And the height of the cone is 1 meter given. And height of the cone h is given 1 meter. Question is this: if the outer side of each of the cones is to be painted and the cost of painting is rupees 12 per meter square, what will be the cost of painting all these cones? And this is given कि use pi is equal to 3.14
and take under root 1.04 is equal to 1.02. Now the first slant height of the cone L, this will be given by under root r square plus h square. R is there, 0.2 square plus 1 square. 0.2 square will be 0.2 to the 4 plus 1. When we will add them, we will get under root 1.04, and is square root is given in the question. Square root 1.04 is 1.02 meter. Okay, so what will be the slant height of the cone? That is 1.02 meter. Question is this कि what will be the cost of painting of all these cones, कि total cost क्या होगी उनको painting की, और पेंट कहाँ पे करना है. If the outer side of each cone is to be painted, now area of the cone which is to be painted, that will be CSA, outer CSA of cone, and that will be pi into r into L. Just put the values. Pi here is given 3.14, r you have 0.2, and L is here 1.02, and this will be meter square. This will be meter square. So 3.14 into this one. Now how many cones are there? 50. ले total का surface area of 50 cones which is to be painted, that will be given by, एक कोन का कितना है 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02 मीटर स्क्वायर. तो 50 का कितना हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाइड विद 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02 मीटर स्क्वायर. नाउ जस्ट कैलकुलेट इट. 50 इंटू 0.2 10 इंटू दिस 31.4 इंटू 1.02 मीटर स्क्वायर. 31.4 इंटू 1.02 स्क्वायर. कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज गिवन. कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज गिवन 12 पर मीटर स्क्वायर. Since rate of painting of 1 meter square is rupees 12. Therefore, total cost of painting will be rupees 12 इंटू इतना एरिया आपने पेंट करना है 31.4 इंटू 1.02. Okay, so when you will multiply this you will get this. Multiply here, we can multiply. This is 31.4 into 1.02. 31.4 into 1.02. Just multiply them. Here is 0, 0, 0,
1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3. Just check this calculation. 8 2 0 1 2 3 1 2 3 32.028. 32 point how much? 0 to 8 into this 12 is here. So now just multiply them. 12 8 का 96 carries 9, 24 और 9 36, 36 12 0 0. Okay, and 3 is here. 24 384 point this one answer. So what is your answer? 384.36. Is it okay? So that's all for today. Thank you very much.